Good morning, students. Today, the topic is A Tale of Two Birds. It is a very interesting story. So, I told you the story. First, a mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm, and the young birds were separated from each other. Each found a different home. It means कि वे एक मदर बर्ड और उसके दो बेबी एक जंगल में फॉरेस्ट में रहते थे. द मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म. उनकी माताजी जो है बच्चों की वो एक स्टॉर्म में मारी गई और वो दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. दोनों ने एक अलग घर मिला. सो आई टोल्ड यू द समरी ऑफ दैट स्टोरी. फर्स्ट, once a bird and her two newborn babies lived on a long, tall tree in a forest. One day, a heavy storm came, and the nest of the birds down, and the mother bird died, and her two child separated from each other. And one bird reached near a cave where the robbers lived, and the other one found a home near a rishis ashram. Slowly they are big birds. After some time, one day the king of the state went to the forest for hunt. He go inside the jungle, and at last he up down from the horse and take rest in a shade of tree. At once he heard a voice. A bird cried, "Come, come, loot down." A person came, loot him, his jewels. And the king saw up, and he found a brown big bird. He think something wrong. He left the place at once, and at last he went the other side of the jungle. Other side of the jungle, where he found a rishis ashram. He got off his horse and take rest. At once he heard a same voice, "Welcome in the rishis ashram. Get inside and take rest." But the king amazed. Same noise. He saw up. He saw same bird, brown bird on the tree. At once the rishi came, and the king asked the rishi, "What is the reason behind this?" He found two places, two birds, and one is different from others. And the other bird told the king that the first one is his brother. So, at last, the rishi told the king that it is the effect of the company. If you live
lived with the robbers, then you behave like the first one, and if you lived with a good or a civilized person, then you hear that noise. So that is the difference. Company is most in a life. If you have a bad company, then your behavior is different. And if you have a good company, then your behavior is totally different. You are civilized citizen. So बेटे इस जो चैप्टर है, जो आपकी यह स्टोरी है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि भी पहले मैंने आपको बताया कि भी एक बर्ड और उसके दो बेबी दोनों अलग हो गए। एक को एक केव के पास, गुफा के पास जगह मिली और दूसरे को ऋषि आश्रम के पास। तो एक दिन उस जो राज्य का राजा है वो शिकार करने जाता है और जब जंगल में आगे तक निकल जाता है तो जब रेस्ट करने की उसने सोची तो वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करना चाहता है गुफा के पास। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी बर्ड की कि जल्दी से आ जाओ, लूट लो, नहीं तो ये चला जाएगा। तो किसकी आवाज थी? एक पक्षी, द बर्ड। द bird child separated from the other, the baby of the bird. So the king slipped away immediately. So he went the other side. तो आपने देखा कि दूसरी जगह जब गया तो वहां ऋषि आश्रम के पास पहुंचा। सेम बर्ड ऐसे ही बिहेव करता है और वो बताता है कि वो उसका ब्रदर है। तो इस तरह से लास्ट में जब ऋषि आ जाता है तो राजा उस ऋषि से पूछता है कि दोनों पक्षी एक जैसे होते हुए, देखिए राजा उससे पूछ रहा है ऋषि से कि भाई किस तरह से दोनों पक्षी बराबर हैं, एक जैसे हैं। वो उसको अपना भाई बता रहा है, लेकिन उसके बावजूद दोनों के बिहेवियर में, एटीट्यूड में कितना डिफरेंस है। तो ऋषि ने बताया राजा को कि ये सब आपके व्यवहार, आपकी कंपनी, आप किसके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उसका इंपैक्ट पड़ता है। सो एट द लास्ट, स्टूडेंट्स, यू रीड दैट चैप्टर एट होम 2 or 3 times and try to understand this and underline the difficult words. Tomorrow we discuss that words and the exercise in classroom. You read that story and underline the answers of that questions. So tomorrow in the classroom we discuss that chapter, the difficult words with same meaning or different meanings, or the sense, and next the question answers. Thank you.